गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल मैथ्स में होल नंबर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर फर्दर टॉपिक जो आने लगा है दैट इज ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस। अच्छा, इसमें बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड नॉर्मली ये देखने में है जनरली कि बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि जब मोर देन वन साइंस आते हैं तो बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्रॉपरली वो गाइडेड नहीं होते, प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो ज़रा आप रूल्स के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो ये याद रखें कि रूल नंबर 1 ये है कि फॉर क्वेश्चंस कंटेनिंग ए पार्ट ओनली एडिशन, अगर उसके अंदर आ जाए या बी ऑप्शन आपको दी जाने लगी है या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन आ जाए या सी है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो ये याद रखिएगा आपने वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है। सो बेटे अगेन आपको ये मैं बताने लगा हूं कि या तो सिर्फ प्लस के साइन आ जाए क्वेश्चन के अंदर या सिर्फ माइनस के साइन आ जाए या प्लस और माइनस के साइन आ जाए एंड आपने उनको सॉल्व करना हो तो आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है। ओके जी, अब हम इसको देखने लगे। ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पुट अप होने लगे इसमें सिर्फ प्लस के साइन है और अब आप इसमें डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ये देखें 14 प्लस 16 आपने पहले करना होगा तो दिस विल बिकम 30, ये प्लस 38 विल कम एज इट इज एंड अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 68। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने जो पुट अप किया जाने लगा है वो देखिए अब इसमें सिर्फ माइनस के साइन है। अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले आपने 88 माइनस 56 करना है। जब आप 88 माइनस 56 करेंगे तो 32 आ जाएगा एंड दिस माइनस 11 विल कम एज इट इज एंड इन नेक्स्ट स्टेप अब आप इसको सॉल्व करेंगे 32 माइनस 11 तो आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखने लगे बेटे उसमें प्लस और माइनस के दोनों ही साइन आगे इन्वॉल्व हो गए हैं। अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले आपको 26 माइनस 12 करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 26 माइनस 12 आंसर विल बी 14 एंड प्लस 9 विल कम एज इट इज और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी जब तक प्लस के साइन आते जाएं या माइनस के आ जाए या दोनों ही साइन क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए तो आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है। नेक्स्ट रूल बेटे आपके लिए आने लगा है रूल नंबर 2 और ये अब जो रूल है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड है। याद रखें फुल क्वेश्चन में या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन आ जाए या फुल क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन के साइन आ जाए या कॉम्बिनेशन ऑफ द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आ जाए यानी सिर्फ ये दो साइन इस तरह से इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब ये देखिए अगेन इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साइन आए हुए हैं तो यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी पहले आप इतने से पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 6 आर 12 एंड दिस मल्टीप्लाई ऑफ 5 जो है विल कम एज इट इज एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू विल मल्टीप्लाई 12 by 5 तो 12 5s are 60 so this is the answer and other question is अब ये देखें ये आपके डिवीजन के साइन आए हुए हैं, यहाँ पे भी डिवीजन का साइन है यहाँ पे भी डिवीजन का साइन है तो आप पहले इतने से पोर्शन को सॉल्व कर देंगे यानी 45 डिवाइड बाय 5 तो 5 के टेबल में 45 5 9s आ जाता है so 9 is the answer and this divided by 3 will come as it is and in next step you will solve this step now 3 के टेबल में 9 3 3s are 9 पे आता है so this is the answer and other question अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन एट अ टाइम क्वेश्चन में आ गया हुआ है तो आप सबसे पहले 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका तरीका वही है कि ये देखें नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8s are 56 एंड ये 0 साथ में आ गया डिवाइडेड बाय 40 विल कम एज इट इज। अब ये देखें अब क्योंकि डिवीजन का साइन है तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा एंड 4 के टेबल में 56 कहाँ पे आएगा ये देखें 4 1s are 4 यहाँ पे 1 कैरी आएगा एंड 4 4s are 16 so this is the answer। ओके बेटे नेक्स्ट रूल आपके पास है फॉर क्वेश्चंस कंटेनिंग द 4 ऑपरेशंस यानी अब एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 ऑपरेशंस आ जाएंगे यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के एंड अब आपने क्या करना होगा कि डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये सबसे पहले आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को लेफ्ट टू राइट आपने सॉल्व करना है और जब आप मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइंस को सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर तो उसके बाद आप फिर क्या करेंगे ये देखें देन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि ये उसके बाद होगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से ये और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है 48 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25 डिवाइड बाय 5। अब ये देखिए ऑल ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए
अब आपने लेफ्ट टू राइट ऐसा आगे मूव करना है और पहले आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये यहाँ से मूव करते हुए आए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में इनके, और थोड़ा सा आगे मूव किया तो यहाँ पे डिवीजन का साइन आ गया। तो अब हम इनको सॉल्व करने लगे हैं। ये देखें 48 माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप जब 3 4 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। आगे प्लस का जो है प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये डिवीजन बीच में आ गया। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 5 के टेबल में 5 5 25। तो इस स्टेप तक आप पहुंच गए। अब जब आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन जो है वो क्वेश्चन के अंदर से खत्म हो चुकी हुई है। अब आप प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे और अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो ये देखें 48 माइनस 12 को जब आप करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। ये प्लस का 5 ऐसे जैसे नीचे आ जाएगा और फिर आप 36 प्लस 5 करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। सो बेटे ये इसका आंसर है। Next rule is rule number 4. For questions containing brackets, do the operations in the brackets first. तो नेक्स्ट रूल ये आने लगा बेटे कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आ जाएं तो अब पिछले रूल्स जो जो आपने पढ़े हैं वो तो अप्लाई होंगे, साथ में न्यू रूल ऐड होते जाएंगे। तो अब अगर ब्रैकेट्स आ जाएं तो आपने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर प्रीवियस रूल को अप्लाई करके पहले ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है। So look at the question. Question is 8 multiplied by bracket start 11 minus 6 bracket close. So definitely अभी आपको बताया गया कि ब्रैकेट को आपने फर्स्ट सॉल्व करना है। तो ये देखें 11 minus 6 को ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे। आंसर विल बी 5 एंड ये 8 और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40। Likewise, next question is 54 divided by 54 plus 16 bracket close divided by 7। तो इस तरह से ये देखें कि पहले ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व हो जाएगा तो ये 70 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 है। एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 5 इज कि देखिए अगर इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाएं, और अब ये देखें पहले एक दफा रूल को देख लेते हैं कि फॉर क्वेश्चंस विद ब्रैकेट्स कंटेनिंग द फोर ऑपरेशंस, कि अगर ब्रैकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस आ जाएं तो एक बार क्या होगा, डू द ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। देन अगला स्टेप होगा डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करना है। एंड फाइनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब ये देखें ये क्वेश्चन आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट स्टेप पे देखें तो चारों ही यहाँ पे ऑपरेशंस आपके सामने आए हुए हैं। ये देखें प्लस का साइन भी है, माइनस का भी है, डिवीजन का भी है और मल्टीप्लाई का भी है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप तो डेफिनेटली ये होगा कि आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ये देखें ये ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करने लगे हैं। 15 प्लस 6 21 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 प्लस का साइन अपनी जगह। अब इस ब्रैकेट को डेफिनेटली सॉल्व करना है तो 24 माइनस 14 का आंसर आ जाएगा 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 का साइन अपनी जगह। अब हम इस जगह तक पहुंच गए तो डेफिनेटली अब ये देखें ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। तो अब लेफ्ट टू राइट आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना है। अब ये देखें जब आपने इसको सॉल्व करना है तो 21 डिवाइड बाय 7, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, ये प्लस का साइन अपनी जगह आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गए। एंड फाइनली फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 53 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके सामने है, इसमें ए पार्ट को देखें। सो हियर इज ए पार्ट। अगेन आप इसमें देखें कि काफी ज्यादा साइंस इन्वॉल्व हो गए। तो अब आपने, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स कोई नहीं है, तो आपने सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आया, तो पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 24। उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब ये देखें डिवीजन का साइन जो आया हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट इज 12 एंड ये 4 प्लस वाला साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। और फाइनली अब आपने 4 प्लस 12 करना है तो दिस इज 16। सो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन आए हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे, यानी क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो अब आप पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को सॉल्व कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो 9 7 63, यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 3, ये बीच वाला साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। एंड उसके बाद जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट इन्वॉल्व हो गई है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट पे लिखा हुआ है 2 प्लस 6,
उसका आंसर आ जाएगा 8। बाकी तमाम वैल्यूज चाहे कोई भी साइन है वो एज इट इज ये देखें नीचे कॉपी होगी। जब यहां तक आप पहुंच गए और ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो आपको अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि ये देखें मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ रहा है। ये देखें 5 8 are 40 एंड उससे लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन भी खत्म हो गए, तो अब आपको प्लस और माइनस के साइन को सॉल्व करना है। तो 98 माइनस 40 आंसर इज 58। डी पार्ट में अगर आप नोट करो तो अगेन एक ब्रैकेट इन्वॉल्व हुई है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये देखें 11 माइनस 3 आंसर इज 8। अब उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के जो कुछ था वो एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में कॉपी हो जाएगा। जब आप इस स्टेप तक आप पहुंच गए तो अब आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई का साइन इन दो वैल्यूज के दरमियान में है और डिवीजन का साइन इन दो वैल्यूज के दरमियान में है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24 एंड यहाँ पे देखें 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। अब बाकी वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब यहां तक जब आप पहुंच के देखेंगे तो अब आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन खत्म हो चुके हैं। अब आप प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। तो प्लस में ये देखें इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे 36 माइनस 4 एज इट इज एंड फाइनली 36 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो 32। Okay, bete, now we are going to practice some questions. The statement of the question is find the value of each of the following. तो आपको अभी concepts पे ये बताया गया था कि if there comes only plus and minus signs in the question, you have to move from left to right and solve them. So, for example, in this question only plus signs are coming. We will move from left to right. First, we will solve these two values. 14 plus 15 answer will be 29. This plus 8 will remain as it is, and in next step we will solve or add these two numbers. 29 plus 8 answer will be 37. This question B part, now we have minus signs in the question. Again move from left to right, क्योंकि आपको ये बताया गया कि if there comes only plus and minus signs in the question, you have to move from left to right and gradually step by step solve them. So first solve 18 minus 8, answer will be 10, minus 6 will remain as it is, and in the next step you will solve these two numbers now. 10 minus 6 answer will be 4. Okay, bete, if you look at the K part in this question, we have plus and minus signs in the question, and gradually we have to move from left to right and solve the values. First we will solve 86 minus 36, answer will be 50. All other values will remain as it is. Again move from left to right and solve further. 50 minus 14, answer will be 36, plus 23 will remain as it is. And in the final step now add these two numbers, answer will be 59. So this is the method. So again if you look at the L part, again plus and minus signs are here in the question. Move from left to right gradually and solve the values. 1000 minus 100 will be 900. All the other values will remain as it is. Now again move from left to right and solve further. 900 plus 10 will be 910. Minus 1 will remain as it is, and final step is now solve the last two numbers. Now 910 minus 1 will be 909. So this is the answer, beta. Okay, beta, question number 9, statement of the question is find the value of each of the following. So beta, if you look carefully in these kind of questions, there comes more than one signs of type division, multiplication, plus, minus. So beta, listen carefully. One category is of plus and minus, and second category is of multiplication and division. And if these two kinds of categories are mixed in a question, like in this question, if you look at the question carefully, here comes plus and minus. So it means these two different kinds are mixing with each other. In these kind of question, you have to move from left to right and solve multiplication and division first, and plus and minus afterwards. So in this question we will solve that portion first, because in these two numbers there is coming multiply sign. So 8 4s are 32, and this 15 plus will remain as it is.
And finally, these two numbers will be added and answer will be 47. If you look carefully in this question, there comes a division. You have to move from left to right and solve division and multiplication first. So in this question, we are moving from left to right. Here comes a minus sign. We will not solve it first. We will solve this portion first. 25 divided by 5. Answer will be 5. And this 75 and minus sign will remain as it is. And in the next step, now solve these two values. Answer will be 70. Again, bete, in this question, you will move from left to right because there are two kinds of categories mixing with each other, yani multiply and division signs, and plus minus signs are mixing with each other. So you have to move from left to right and solve multiply and division first. So we will solve this portion first. 9 5s are 45 and minus 30 will remain as it is. And in the next step, when these two will be solved, answer will be 15. Okay, bete, in this question, here comes division sign between two values. We are moving from left to right and we are going to solve division and multiplication first. So 0 will be cancelled with 0 and 3 6 are 18. And this plus 48 will remain as it is. And finally, these two numbers will be added and answer will be 54. Okay, bete, we are going to solve K and L part now because in these two questions, minus, plus and multiply signs are coming, and in this question, plus, divided by and multiply signs are coming. So when two categories, like first category is of multiply and division sign, second category is of plus and minus sign, when these two categories come or mix with each other, we have to move from left to right and solve multiplication and division sign first. So in this question, we will solve this portion first, and all other values will come as it is, like 78 minus 18, and this plus sign will come as it is, and this portion is going to be solved. 10 multiplied by 4 is 40. Now one category is totally eliminated, like plus and minus signs are not seen in this portion now. Now we will move from left to right and solve plus and minus sign. So 78 minus 8, answer will be 60. Plus 40 will remain as it is. And finally, when this portion will be solved, answer will be 100. Likewise, in this question, bete, L part, here is coming division sign. So division and multiplication signs will be solved first. So all other values will come as it is, like 21 plus, and this multiply 4 will remain as it is. So 18 divided by 3, answer will be 6. And now this portion will be solved. Answer will be 6 4s are 24. 21 and plus sign will come as it is. And finally, this will be solved and answer will be 45. Okay, bete, if you look at the L part, here comes minus, multiplication and plus and division signs. All four signs are coming. All four operations are coming in this question. First category is multiply and divide. Second category is minus and plus. And in this question, both categories are mixing with each other. So the method is move from left to right and solve division and multiplication first, and then afterwards solve plus and minus. Like in this question, we will solve this portion and this portion first, and all the other values will come as it is, like 25 minus, and this portion will be solved. 5 3s are 15. This plus sign will come as it is, and 40 divided by 8, answer will be 5. So we have solved multiply and division first, and now again move from left to right and now solve minus and plus sign. Like 25 minus 15, answer will be 10. Plus 5 will remain as it is, and now solve these two values, answer will be 15.
Okay, but in K part, now this is the next category because brackets are coming now. So whatever the values are, whatever the operations are coming in the question, if bracket comes, you have to solve the bracket first, and you have to follow the same rules. So in this question, here is the bracket. We will solve the bracket first. 60 divided by 3, answer will be 20. All the other values will come as it is. And now brackets are finished now. Now move from left to right and solve division and multiplication first, because in this question here is coming a multiplication. We will solve these two values first, and 50 plus will come as it is, and 20 minus multiplied by 2, answer will be 40. And finally, now these two values will be added and answer will be 90. We will solve the bracket first, and all other values will remain as it is, like 200 minus and multiply 6 divided by 3 will come as it is. If there comes bracket, solve the bracket first, and bracket is going to be solved now. 32 plus 18, answer will be 50. So in this at this step we can see bracket is finished now. Now there is coming minus, multiply and division signs, and gradually we will move from left to right and solve multiplication and division first, and then afterwards plus and minus signs. So here comes division sign. This will be solved. 6 divided by 3, 2. All other values will come as it is. 200 minus 50 multiplied by. Now at this step we will solve this portion. 50 multiplied by 2, answer will be 100, and all other values will come as it is, like 200 minus will come as it is, and the final step is 200 minus 100 will be answer will be 100. In V part, here comes the bracket. So bracket will be solved first. 2 5s are 10. All the other values will come as it is. So bracket is finished now, bracket is solved now. Now we will move from left to right and solve multiplication and division signs first. So this is the portion which will be solved first. 60 divided by 10, and all other values is coming as it is now. 60 divided by 10 will be 6, and plus 8 minus 3 will come as it is. So at this stage now move from left to right and solve, because only minus are coming now. So gradually solve the values. 120 minus 6, answer will be 114, plus 8 minus 3 will come as it is. Now solve 114 plus this one plus 8, answer will be 122. Minus 3 will come as it is, and the final step is 122 minus 3, answer will be 119. So this is the method. Okay, and other question, W part. Here comes the bracket. Bracket will be solved first, but if you look carefully at the bracket, there comes two types of the signs, two types of the operations, and we will follow the same rule in the bracket. Bracket will be solved first, but rules will be the same. Move from left to right in the bracket and solve the division and multiplication sign first. So 5 6 are 30, and 38 will remain as it is. Minus sign will remain as it is, and this portion will be solved first. 5 6 are 30, and all the other values outside the bracket will remain as it is, like 64 divided by, and here comes 7 plus 3 multiplied by 4. At this step again solve the bracket. So 38 minus 30 will be solved, and all other values will come as it is, like 64 divided by, and this portion will be solved, answer will be 8, and all other values are coming as it is, plus 7 plus 3 multiplied by 4. So bracket is solved now, and now move from left to right and solve division and multiplication first. So here comes the division and here comes the multiplication. So these will be solved. 64 divided by 8, answer will be 8, plus 7 plus 3 will come as it is. Sorry, plus 7 plus will come as it is, and 3 4s are 12.
And at this stage, now solve the other values, because multiply and divided by signs are also solved now. So 8 plus 7, 15, plus 12, 27. So this is the answer. Okay, beta, export. In export, there is coming two brackets. So these two brackets will be solved first and follow the same rule. In the bracket, we will solve these two values first. 6 4s are 24, plus 3 will come as it is. Divided by 9, multiplied by 42. 42 divided by 7. Answer will be 6. Okay, beta, now again solve the bracket. 24 plus 3, answer will be 27 divided by 9, and multiply by 6 will come out now because brackets are solved now. At this stage, we will solve this portion first. 27 divided by 9, answer will be 3, multiply by 6 will come as it is, and final step is 3 6 are 18. So this is the answer.